Namaskar, good afternoon, and very warm welcome to all our viewers and learners in this special live phone-in session of CIET NCERT named Paricharcha. I am Renu Bhatt, and you are with us on PMeVIDYA channel, channel number 6 and 11, and also on our YouTube channel, that is NCERT Official itself. And dear learner, let me tell you the topic for this discussion, and the topic is very much relevant today, and the topic is strengthening happiness among adolescents. And if we talk about strengthening happiness, this is the need of the hour, and not only in adolescents, in all of us, irrespective of our ages. And dear learner, let me tell you the ways through which you can participate in this special live phone-in session named Paricharcha. You can connect to us through our YouTube channel, that is NCERT Official. Go to the live chat box and drop your comment out there. Either you can call us on our telephone number, that is 844-844-0632, and if you have joined us through our Facebook page live streaming, that is National Council of Educational Research and Training, again NCERT, and you can drop a comment out there. And for more detail about Manodarpan Paricharcha, you can log on to our website, that is www.manodarpan.mhrd.gov.in. And these are the mediums through which you can participate in this live phone interactive session. And we are expecting your participation because this is very crucial topic and subject. And let me give you some brief about Paricharcha Manodarpan. It's an initiative by Ministry of Education for psychosocial support and mental well-being of students. And dear learner, we have joined by our esteemed panelists. Let's meet them. You are Dr. Rajiv Ranjan. You are Assistant Professor in Special Education, RIE NCERT Ajmer. Very warm welcome, sir. Once again, and thank you so much for giving this opportunity to me. Thank you, ma'am. The pleasure is all ours. And our second expert is Dr. Manish Agrawal. You are also Assistant Professor in RIE NCERT Ajmer. Very warm welcome, sir. Thank you so much, ma'am, and I'm fortunate to be a part of this Manodarpan program. Thank you. Our third panelist is Dr. Uzma Nasir. You are Assistant Professor, South Campus, University of Kashmir. Welcome, ma'am. Very good afternoon, ma'am, and thank you so much for having me in this session. And our next panelist is Dr. Romesh Kumar. You are Head Counseling Cell, Directorate of School Education, Jammu. Very warm welcome, sir. Thank you very much, ma'am. I'm feeling privileged to be part of this August group in this Paricharcha Manodarpan. So being committed to the well-being, I think we are already doing a great in Manodarpan, and I feel viewers will get a lot of help from this session. So I request all of you to stay connected to this session. Thank you. Right. Right. And last but not the least, our next expert is Mrs. Vartika Sharma. You are Principal, Swami Vivekanand Government Model School, Ajmer. Very warm welcome, ma'am. Namaskar, ma'am. I'm very happy to be a part of this panel and for the betterment of our adolescent students and children. So best wishes to the panel, and let's start with it. Right. We are also pleased to have you all in our discussion, and this is very important discussion, dear learner. Please feel free to connect to us through our various mediums. We want you to participate in this live phone-in session. Let's begin this session with Dr. Rajiv, sir, with you only. And my first question to you is, what do you mean by happiness? What exactly happiness means, sir? Thank you so much, ma'am. Once again, welcome to all the students of this Manodarpan, the young mind of India, I always say. और continuous हमारे तरफ से जो है, हमारी टीम की तरफ से हम कोशिश ये करते हैं कि जितनी पॉजिटिव चीजें हैं वो आपके लिए लेकर आए. और इस वक्त खास करके आपके कुछ स्टूडेंट्स के रिजल्ट आने वाले हैं, 10th के 12th के. ऐसे टाइम में एक सिचुएशन ऐसा है जिसमें आपके लिए जो भी रिजल्ट आए आप हैप्पी रहें. तो हमारी टीम ने यही डिसाइड किया कि इस वक्त हम कुछ बात नहीं करेंगे और सिर्फ हैप्पीनेस की बात करेंगे, ताकि ये एक हर तरह से एनालिसिस होके आपके लिए जाए. तो बाय डेफिनेशन तो हैप्पीनेस जो है एक स्टेट ऑफ माइंड है या आपका मूड है
कि एक पर्टिकुलर टाइम में आप किस तरह से फील कर रहे हैं। इन जनरल यही है, बट हैप्पीनेस अपने आप में एक बहुत बड़ा कहें कि ट्री है जिसमें अलग अलग ब्रांचेस, तो किसी एक ब्रांच में हो सकता है कि फ्रूट्स लगे हुए हैं, किसी एक ब्रांच में फ्रूट्स नहीं लगे हुए। तो इस हैप्पीनेस में हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप की बात हो, आपके अपने इमोशंस हो, मेंटल हेल्थ की बात हो, आपकी फिजिकल हेल्थ की बात हो, और किसी चीज के लिए आप कंसर्न हो, तो कई चीजें हैं, मतलब मेंटल हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ है, आपके इमोशंस हैं, आपकी जो कॉग्निटिव कैपेबिलिटी है वो कितना यूज हो रही है, तो हर चीज का एक आउटकम आता है हैप्पीनेस से मिलके। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप अपने लाइफ को जो लीड कर रहे हैं, एनीबडी हु इज लीडिंग हिज लाइफ, हाउ मच ही इज लाइकिंग हिज ओन लाइफ एट प्रेजेंट टाइम, or maybe when he is analyzing his past also, and when he is concerned about his future also. So all these things comes when making a mind happy or not happy. एक और चीज है कि happy का अगर हम opposite देखें तो this is sad. There are minds who are not happy and not sad also. हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी माइंड जो है वो बहुत हैप्पी है और कोई माइंड ऑलवेज सैड। हो सकता है कि हम 5-6 टीनेजर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो हम 6 टीनेजर्स में डॉक्टर रोमेश जो हैं वो एक 16-year-old बॉय हैं और ही इज नॉट फीलिंग वेरी हैप्पी एंड ही इज नॉट फीलिंग सैड आल्सो, सो ही इज जस्ट सेटिस्फाइड विद हिज वर्क, टुडेज वर्क, एंड एवरी डे ही इज प्रिपेयरिंग फॉर हिज एग्जामिनेशन एंड ही इज सेटिस्फाइड विद दैट. He is not happy, very happy, because there are responsibilities और there are tasks. उन्होंने 2 सब्जेक्ट का प्रिपेयर किया है और 3 सब्जेक्ट का और प्रिपेयर करना बाकी है और वो सिस्टमैटिकली चल रहा है. So he might not be very happy, and he is not sad also. So this is satisfaction with your. That's why how much you are liking your or the life you are leading, or your work, whatever your activity you are performing, with that particular activity you are happy. So this is subjective also. This is very much subjective also. Maybe Dr. Umesh is just neutral, not very happy, not very sad. But Dr. Manish Agarwal is very happy because he has completed his work. He has completed 4 out of 5 subjects. So he is very happy and he is going to play. He is feeling that today I am going to play cricket because I have completed 4 subjects out of 5. And evening or night when I will come, I will just look after one more subject and I will complete my homework or task, and then it is good. So he will be better happy. But Dr. Umesh, pace of work is that only. He completes 2 work in the morning and 3 subject in the night itself. So this is his own way of working, his own way of performance, his own way of his own pace of performance, and he is satisfied with that. So that's why it is subjective also. Okay, nevertheless, society also comes in the picture. Like it is individual, but then also the environmental things also affect. Like because of some reason, if Dr. Romesh is not able to perform his work today, or he cannot complete the 3 more subjects, even he was willing, then he might not be happy. So maybe somebody in the family is not well. It also happens that somebody in the family is not well, then one child will be very much sad. He will not feel happy, or he will feel sad only. He will leave his work of his task also. He will not study. He will take care of his family, maybe mother or father or parents, anybody. He will just look after. That I have to look after this time. I will study later on. But there are children who will study, who will look after also and study also. But there are children who will study. Okay, there are people in the family who are looking after, and I have to study. So it is individual. How you want to make your work balance, how you want to perform in a balanced way, that depends on the person. So that's why here concern, responsibility and challenges also come. My dear students, why I am bringing this point, because if you are taking the challenges, if you are taking the responsibilities, or if you are bringing concern for your family member or your friends, you might not be happy always. And this gives you satisfaction. There are individual personality who spend his life in taking care of others, and they are satisfied with that. Once again, I repeat, my dear students, there are people in this world, there are individual personalities in this world, there are family members
who look after others. There are friends who look after others and they get satisfaction in that. They will not be happy always. You cannot see happiness or very much happiness on their face, but still they are there. It gives satisfaction to them. They give priority to that particular caring and keeping concern for themselves. So that's why whatever concern you are showing for whichever work, for whichever duties, whichever responsibilities, and when you feel responsible, when you have concern about particular individual or particular work, you are taking challenges, you might not be happy, but that is a type of happiness also, or satisfaction also. If you get satisfaction with that, it is your happiness. So happiness does not mean smiling or laughing or maybe the very good faces. It does not mean that. It is satisfaction you are getting with your daily life or your performances. This is one thing. Another thing from here goes is maybe there are happiness, there are people or there are students who are getting happiness with their friends when the friends are there with them or friends are not with them. So one thing, the peer group, I would like to bring it, because at this adolescent age, if we see different theories like addiction theories or maybe the Piaget's final theory when they enter in this life, that if we look after, it says that at this particular time, intimacy is also important. Start of the career is beginning, the career is beginning also, they are just thinking about their career also, and intimacy is also dependent. So that's why the role of friends are also important. Later on, we are going to discuss in this forum or in this meeting many things like factors or what are the things which strengthen the happiness, and for children with special needs, whatever will be the curriculum, all those things we are going to discuss with our very respected panelists. So I stop this introduction here. This happiness is individual and how you are going to lead your life at the same time. Over to you, ma'am. Very rightly said. So it fully depends on the individual person how he or she wants to lead his life or her life. Ma'am, Vartika ma'am, here I would like to ask you a question about the factors affecting happiness for adolescents, ma'am. Vartika ma'am. Yes, ma'am. Dr. Ranjan started with what is happiness. Basically, every child or adolescent person entering into another track of life needs to know the basic reasons. कौन सी चीजें ऐसी हैं जिन्होंने उनके जीवन के इस खुशियों के आधार को भिन्न किया हुआ है? Because first of all, we need to understand one thing, ma'am, that this is a transitional stage of physical and psychological development that generally occurs from puberty to adulthood. और हम देखते हैं कि मैच्योरिटी जो है वो रीजनिंग और थिंकिंग के साथ स्टार्ट होती है. तो सबसे पहले हम देखें इसके 7 हमारे जो फैक्टर्स हैं, तो हम सबसे पहले फिजियोलॉजिकल देखते हैं. हम देख रहे हैं कि एक देयर आर मेनी हार्मोनल चेंजेस. एडोलेसेंट एज में जब हम एंटर करते हैं तो द चाइल्ड चेंजेस, और वो अपने रोजाना छोटे बचपन से अचानक से नई तब्दीलियों में जब आता है तो यह फैक्टर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है. ही इज आर्गुमेंटेटिव. उसकी नेचर में बहुत तब्दीलियां रहती हैं. आप देख सकते हैं वो उग्र रहता है. उसके कहना मानने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं बिकॉज द मेंटल स्टेबिलिटी जो उसकी होती है वो उतनी स्ट्रेंथनिंग नहीं होती है, बिकॉज वो डू और डोंट, इफ एंड नॉट, बट और नॉट, इन सारी चीजों के बीच जब निकल रहा होता है तो उसके अंदर अपनी खुशियों को ढूंढने का मादा थोड़ा सा कम हो जाता है. फिर हम देखते हैं एक फैक्टर आता है इनका इमोशनल, वेयर वी सी दैट देयर इज अनस्टेबिलिटी इन देयर बिहेवियर. इमोशनल फैक्टर्स में आप देखेंगे दे आर अफ्रेड, दे नीड लव, दे नीड मोर अफेक्शन. हमारा जो
यूथ है, जो एडोलसेंट बच्चे हैं, मेरे बच्चे अभी सुन भी रहे होंगे, मैं उनसे कहना चाहूंगी कि आप जब थोड़ी सी उम्र के बदलाव पर आते हैं तो आपकी खुशियों को ढूंढने के आपके जरिए बदल जाते हैं। देयर यू नीड्स, आप कभी परेशान होते हैं क्लासरूम के बिहेवियर से, पीयर ग्रुप के बिहेवियर से, देयर यू नीड सिंपैथी, यू वांट टू हैव अ लिटिल बिट ऑफ कोऑपरेशन एप्टीट्यूड फ्रॉम योर फ्रेंड्स और फैमिली और सोसाइटी। तो ये जो इमोशनल बॉन्डिंग्स की चीजें आती हैं, यह भी एडोलेसेंट के हैप्पीनेस को स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत आवश्यक होती है। इसी तरह जब हम इसके तीसरे फैक्टर की तरफ बढ़ते हैं मैम, रेणु मैम, मैं ध्यान ले जाना चाहूंगी आपका, जो सोसाइटल इश्यूज हैं उसकी तरफ, तो हम देख रहे हैं कि आजकल क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इन आवर सोसाइटी, दैट न्यूक्लियर फैमिली की तरफ हम बढ़ रहे हैं और बहुत चीजें बदल रही हैं, जहाँ जॉइंट फैमिलीज कम होती जा रही हैं और जहाँ पहले छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स होती थी बच्चों की, उनके चाचा ने सुन लिया, बुआ ने सुन लिया और एल्डर ब्रदर है, दादी के पास थोड़ी देर बैठ गए। तो ये जो सोसाइटी के अंदर नॉन कोऑपरेशन जो आजकल आ रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ द रीजन दैट आवर यंग children are not interested to talk to them, to share their things with them. Then how can they be happy if you are sad by the behavioral thing of your teacher or your mama or your papa? Then you try. So this thing keeps you affected. And then if we talk about the cultural factors, nowadays you see उन सारी चीजों से, आई डोंट टॉक अबाउट द रिलीजन एस्पेक्ट इन कल्चरल इज समवॉट जहाँ फैमिली बॉन्डिंग होती है, कभी कभी कुछ सोशल फंक्शंस होते हैं, पड़ोस में कहीं जाना है, तो हम देख रहे हैं आर एडोलेसेंट पीपल, दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू पार्टिसिपेट, क्योंकि एक एजिटेटिव नेचर का, आर्गुमेंटेटिव नेचर इन बच्चों में थोड़ी सी आ जाती है, जिससे ये खुश नहीं रह पाते। इन्हें लगता है हमारी मर्जी से कोई चीज को होना बहुत जरूरी है। तो पार्टिसिपेशन इज मस्ट इन सोशो एंड कल्चरल बोथ एक्टिविटीज ऑफ नॉट ओनली दैट पर्टिकुलर चाइल्ड, क्योंकि वो तभी खुश हो सकते हैं जब उनके एनवायरनमेंट से आप उनको जोड़ें, प्रतिदिन की चीजों के साथ उनको जोड़ें। धीरे धीरे हम एक एस्पेक्ट की और बढ़ते हैं, तो वो होता है उनका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का। आप देखिए बहुत सारी अस्थिरताएं बच्चों के साथ जुड़ी हैं, इंस्टेबिलिटी होती है। एक तो यह है कि उनके मैल न्यूट्रिटिव जो वो लोग देख रहे हैं, आप देखिए किसी का हैप्पीनेस नहीं, अब मेरी हाइट कम रह जाती है और मेरा रंग थोड़ा सा काला है तो मैं बहुत दुखी हूँ। अब इस दुख को व्यक्त करने के लिए मुझे मेरा कोई ऐसा साथी या मेरे परिवार का कोई हिस्सा चाहिए जो मुझे समझ सके कि नहीं वर्तिका, तुम्हारी हाइट अगर 4'8" भी है, बट यू कैन डू दिस वंडर। सो दिस इज यू नीड टू हैव द इंस्पिरेशनल थिंग। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो आपको लेकर जाता है, जहाँ बच्चे के निर्णय लेने की शक्ति में भी चंचलता रहती है, वो इनस्टेबल होता है, वो बहुत सारे निर्णय नहीं ले पा रहा होता है, वो सोच रहा होता है कि मैं अपने कुछ पर्सनल चीजों के कारण खुश नहीं हूँ। फिर हम देख रहे हैं आज सोसाइटी के अंदर अवेलेबिलिटी ऑफ रोल मॉडल्स जो है। अब रोल मॉडल्स जैसे टू बी अ पार्ट ऑफ दिस पैनल, आई वुड लाइक टू से दैट वी आर कनेक्टेड विद राजीव रंजन सर, मनीष सर, एंड नाउ वी आर अटैच्ड टू रेणु मैम ऑल्सो। तो यू कैन बी अ रोल मॉडल ऑफ सम एडोलेसेंट ऑल्सो, कि नहीं मैम ने ऐसा करा है तो आई वॉन्ट टू बी लाइक दैट। आपको जैसे टीचर्स हुए, फैमिली मेंबर्स हैं, जो कुछ कोचेस होते हैं, हमारे पीयर ग्रुप में कुछ होते हैं, तो इन रोल मॉडल्स से भी हमारे को स्ट्रेंथनिंग मिलती है हैप्पीनेस में, क्योंकि अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ जब हम कार्य को करते हैं। पर आजकल चूंकि बच्चे थोड़ा अलग रहना चाहते हैं, सेक्युलर स्टेट में रहना चाहते हैं, दे डोंट वांट टू इन्वॉल्व देमसेल्व्स इन मेनी थिंग्स, तो दिस थिंग आल्सो मेक्स देम अ लिटिल बिट अनहैप्पी, एंड दिस इज अ मेजर फैक्टर व्हिच अफेक्ट्स अवेलेबिलिटी ऑफ रोल मॉडल्स इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। टीचर्स को भी बहुत आगे बढ़कर पेरेंट्स और दोस्तों भी आगे आना चाहिए। और इसके साथ साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारी एक और फैक्टर जो बहुत बड़ा है, जिसमें हम देख रहे हैं कि नाउअडेज इट्स अ कंपटीशन टाइम। बच्चों को बहुत जल्दी से हतोत्साहित वो हो जाते हैं, दे आर लाइक, उनका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है मैम, और जो पीयर प्रेशर उन पर पड़ रहा है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई बहुत ज्यादा अंक लेकर आ रहा है, कोई बहुत कम लेकर आ रहा है, कभी कभी किसी की
गेम्स में कैपेबिलिटी अच्छी है तो कोई ओरिएंटेशन में बहुत अच्छा है। तो ये जो पीयर प्रेशर आपस में बच्चे स्कूल में बेसिकली फ्रॉम द 9 to 12 स्टैंडर्ड में डील कर रहे हैं, वहां मैं देख रही हूँ कि वो एकेडमिक्स में, कोकरिकुलर एक्टिविटीज में, इनमें बहुत महसूस करते हैं। वहां पर उनको कुछ तब्दीलियों में वी नीड टू हैव गाइडेंस। उनको गाइडेंस का जो फैक्टर और स्टेज मिलना चाहिए वो बहुत आवश्यक है। और दूसरा, हम इन लोगों से एक्सपेक्टेशंस भी बहुत हाई रखने लगते हैं। वी नीड टू हैव नो स्काई इज द लिमिट। अगर हम एक बच्चे को सिखा दें कि लेट्स लर्न वन थिंग इन लाइफ दैट स्काई इज द लिमिट, बट वो भी बहुत मैम मुश्किल सा हो जाता है। क्योंकि आप देखें बच्चे करियर कॉन्शियस है, 11th में आप देखिए वोकेशनल गाइडेंस, कभी करियर काउंसलिंग, एवरीथिंग इज हैपनिंग। फैमिली में वो देख रहे हैं कि मैं कैसे, तो वो कुछ थोड़े से अनहैप्पी से माहौल में आ जाते हैं क्योंकि वो ग्रुप में मोबिलाइज नहीं करते हैं। इन सारी चीजों से मैं देख सकती हूँ कि द चिल्ड्रन, द एडोलेसेंट्स बेसिकली, उनमें एक सेल्फ रिस्पेक्ट की फीलिंग को लेकर भी मैम बहुत ज्यादा आजकल एक कश्मकश सी चल रही है, तनातनी रहती है। बिहेवियरल चेंजेस जो उनके आ रहे हैं, क्योंकि मुझे एरिस्टोटल की एक लाइन मैं कोट करना चाहूंगी मैम बच्चों के लिए कि हैप्पीनेस इज द मीनिंग, like happiness is the meaning and purpose of life, the whole aim and the end of human existence। तो मैं तो अपनी बात को यह कहकर उस्मा जी की तरफ अपने आप को ले जाना चाहूंगी, क्योंकि आजकल जो बालिकाएं हैं और गर्ल्स हैं, उनको भी हम एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल में अपने लाइफ में लेकर आ रहे हैं और उनके लिए भी समाज में बेहतरीन दायरों के साथ उन बालिकाओं के उन्नयन पर पढ़ रहे हैं। तो हम अब अपने फैक्टर्स को यहाँ विराम देके मैं उस्मा मैम आपसे जानना चाहूंगी कि हम गर्ल्स के लिए और क्या चीज बहुत महत्वपूर्ण कर सकते हैं। जी मैम, आपने बहुत ही अच्छे से कहा। इंडीड ये सारे फैक्टर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ख़ासतौर पर जब आपने कहा कि एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो जाती है, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस भी हो जाती है, बच्चों की अपने आप से एक्सपेक्टेशन हो जाती है। जब अपने क्लासरूम में देखते हैं, अपने पीयर प्रेशर या पीयर ग्रुप में देखा जाता है, कजन्स को देखा जाता है, तो दे आर सो मेनी कंपैरिजंस। तो इतने सारे कंपैरिजंस जब एक बच्चा एडोलेसेंट एज में झेलता है या हम कहें कि उससे गुजरता है, तो वो ज़रूर काफ़ी हद तक ट्रिगर करता है बच्चों को। यहाँ पर डॉक्टर उस्मा, हम आपकी तरफ आते हैं। जैसे मैम ने कहा, उन्होंने कहा कि हम बालिकाओं की अगर बात करें, इफ़ यू टॉक अबाउट एडोलेसेंट गर्ल्स, तो वो क्या कुछ ऐसा करें जो अपनी लाइफ को वो हैप्पीली, जॉयफुली मैम एंजॉय कर सकते हैं? Yes, thank you, Renu ma'am, once again. And definitely you are talking about the girl adolescents. So definitely certain factors are there that are really important for making a girl's life joyful and happy. So the first thing which is in my mind is be yourself. So you can't be truly happy unless you be yourself. To be yourself, you have to understand who you are. You have to understand the kind of person you are, the temperament you have, the kind of personality you have. In a nutshell, you have to understand yourself. So how would you understand yourself? There are certain things you have to do. You have to spend a quality time, a good amount of time with yourself to think about your aims, your objectives, about the purpose of life. And you have to do one thing. You have to listen your inner monologue. What's inside you, you have to listen that. So do you know one thing? While understanding yourself, sometimes you worry about the other's opinion. जैसे अभी भी बात हुई, हमारी अभी भी बात हुई कि हम दूसरों के बारे में बहुत सोचते हैं। सो मेरे ख्याल से अगर मैं बात करूँ, हर महिला के जीवन का एक रोग है, क्या कहेंगे लोग, ठीक है। तो हम हमेशा सोचते हैं, वी ऑलवेज थिंक अबाउट अदर्स ओपिनियन, वो क्या कहेंगे, वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में, इफ आई डू दिस एंड आई विल डू दैट। सो डेफिनेटली वी टेक केयर ऑफ अदर्स ओपिनियन। सो वी शुड नॉट डू ऑल काइंड ऑफ थिंग्स। दूसरों की ओपिनियन को हमें अपने आप पे असरअंदाज नहीं होने देना है। Another important things you have to do, what being yourself, you have to stop living in the past. हम ज़्यादातर देखते हैं we usually give importance to the past and neglecting our future. Dear students, dear viewers, do you know one thing? Your past does not equalize your future.
if in your past you have done any wrong thing, any mistake, and everyone does mistakes. It's not one man who does the mistake. Everyone does mistakes. So, and these mistakes really don't define you. Mistakes never define you. And instead of that, what you have to do, you have to learn from these mistakes. And when you learn from these mistakes, you will definitely learn to let go the guilt and stop living in the past. Another thing what you have to do is you don't need to stop pleasing others. When you stop doing that, when you don't please others, so what you do, if you please others, then you are untrue to yourself. You are definitely untrue to yourself if you are pleasing others. So and what you are doing by pleasing others, you are wasting your time, your energy. So instead of that, you have to please yourself. You have to use time for yourself. So my young minds, so my dear students, you have to utilize your time efficiently and effectively. After analyzing yourself, when you know yourself, what you have to do, you have to embrace it. You have to embrace yourself. You know what, ma'am, what's currently going on? Life is constantly, life's constantly reminding us what we don't have. But what about all these things what we have? We are not focusing on those things what we have. We often do comparisons. Abhi Vartika ma'am bhi baat kar rahi thi ki we mostly do comparisons with others. So what that do when we compare with others? Definitely our happiness gets destroyed. जो joyfulness होती है, खुशी होती है, वो destroy हो जाती है girl child life में. So keep this thing in your mind. You have something in you special. Something is definitely in you that makes you special. Instead of nourishing that speciality, you focus on comparisons. When you compare, you definitely lose your identity. And this is one of the biggest statements when anybody loses their identity. Another important thing, which is after embracing yourself, these are two important points. Being yourself and embrace it, hold it, what you have. What you are, what you have, you have to hold it, you have to perceive it, you have to preserve it. And when you do that, you definitely become a happy life. You definitely lead a happy life. So these are the main 2 points which I would like to reflect again and again. Be yourself and embrace yourself. Another thing is acknowledge and accept the weaknesses. Every human being has weakness. It's not one being who has any weakness. Everyone has strengths. Everyone has weaknesses. So nobody is perfect in this universe. We all are imperfect. We all are growing in this universe. So if any student, if any girl child may have seen, may have some darkest feeling. Sometimes you may have, an individual have any darkest feeling in their life. So if you're not sharing with anybody, anyone who is a stranger, who is not known to you, that's probably a wise decision. And I can say it's a smart decision if you're not discussing any problem with a stranger. But why you are hiding with yourself? Why you are not letting yourself know about your weaknesses, about your strengths, about your problems? So the first and foremost important thing is you have to recognize your weaknesses. You have to accept it. After recognizing, you have to accept your weaknesses. What is hurting you? What's weak? What's your weakness? What's your problem? After that, when you accept it, when you acknowledge it, when you recognize it, you have someone to talk. You need to talk to someone. Either it may be your teacher, either it may be your friend or your parent, your sibling. It may be anybody who can help you to get out from these problems. So young minds, young girls can do these things to get out from these problems. Definitely adolescence, this is the transitioning period, and we know we all have emotional imbalances and all. So we need someone where we can talk. So my dear friends, you can talk to your dear ones, you can talk to your friends, you can talk to your classmates, you can talk to your teachers, your siblings who can help you to solve these problems. Another important point, which is for making the adolescent life happy, is developing goals and achieve them. One thing, you have to develop goals. There's a one saying, empty mind is devil's workshop. So there's a common saying,
these the empty minders, devil's workshop, सभी common same. So जब हम बात करते हैं किसी भी goal की, there should be a goal for a life, and you really need to try and achieve these goals. Having something positive to look forward is most important, essential for life. So my dear students, my dear friends, you have to set goals for yourself. It's not only about big dreams or small dreams. Only just you have to dream for yourself. कितना ही बड़ा ड्रीम ये नहीं आपको सेट करना है, मैंने वो करना है, मैंने ये करना है, बस you have to set a goal कि आपका दिन कैसे प्रोडक्टिव हो जाए. What I have achieved today. So while doing that, अगर आपने when you meet these goals, when after meeting these goals, once these goals are come true, you have to set new ones and keep going and keep setting new goals. Another important thing which also Renu ma'am have discussed, it's about don't expect too much. When we expect too much from others, we expect love, we expect attention, we expect help from others. So definitely it will hurt us, and it will, definitely you'll get disappointed. And this disappointment definitely leads to the, sadness, or this will ultimately affect your happiness. Instead of really, if you want these things in your life, you have to earn them. Instead of, you're expecting them, and you need to earn these sort of love, affection, all these things you need to earn, not you need to expect from the others. The another point is you have to feel content. अगर हम बात करेंगे, अभी वर्तिका मैम से बात हो रही थी, वो बता रही थी कि जब कोई छोटा होता है, विठा होता है या कलर किसी का सांवला होता है, तो we just get offended, हमारा ये क्यों, ये सब चीजें क्यों. So definitely हमारे पास कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम कंपैरिजन, जो हमारे पास वो सबसे यूनिक क्वालिटीज होती है. So we feel content with the life. Life is itself a gift. जब हम life की बात करते हैं, always remember, life is a gift. Almighty has sent you here to enjoy the world, to enjoy this creation. So life would not be same at all the times. There may be ups and downs. Definitely the life is full of ups and downs. So wait for your day. A day will definitely come when you feel beauty of this world. So don't stress out. Don't feel bad. Don't stress out about your negative things. Have a positive mindset. This will definitely help to make your life joyful and happy. Over to you, ma'am. Indeed, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. And it was rightly said by you that be yourself and be satisfied. And this is the key to success and happiness, we can say. मनीष सर, यहाँ पर मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी और इस डिस्कशन को और हम आगे ले जाना चाहेंगे. वी हैव हर्ड अ लॉट फ्रॉम आवर पैनलिस्ट बाय डॉक्टर राजीव एंड मिसेस वर्तिका एंड फ्रॉम डॉक्टर उस्मा एज वेल. सर, यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूँगी, हाउ कैन वी स्ट्रेंथन हैप्पीनेस अमंग एडोलेसेंट? हाउ, कैसे हम ये कर सकते हैं? हाउ वी कैन अचीव दैट? Thank you so much, ma'am. We can strengthen happiness among adolescents if we go on advising and trying to implement some improvements in their lifestyle, so our adolescents can be happy. So as we know that in the present era that is highly competitive, so it is highly needed to see happy adolescents who can not deal with pressure while they can perform their duties wisely to contribute at individual and societal level. In that way, we can understand if they follow a certain pieces of advices and they make practices. The first one, which is highly recommended, eat healthy. It is always advisable to our students who should eat properly and regularly. It has been observed many times that many students skip their breakfasts and they go on joining classes in the morning, but they miss their breakfast. It is very harmful for their physical health as well as for their mental health. It affects their happiness too. So all the students should take healthy food as well as they should not miss or skip their breakfast especially. So as we have seen that many students who don't like
healthy food. They prefer to go for junk food, fast food. So they should avoid such food, and they should try to take healthy food that will boost their physical health as well as mental health. Second one that is highly important, sleep well. Many times it is directly and sometimes indirectly related to our happiness. If any student does not sleep properly and well, that child complains for fatigue and exhaustion, so it affects their happiness. So we can strengthen happiness if we tell students how they can sleep well. So it is advisable to meditate. They should keep in mindfulness state. They should try to be aware what is going on. In this way, they can sleep well. Many times it is suggested that they should take part in exercise. It is directly related to their sleep. If they exercise in the day, they can sleep well. Third one, that is exercise. Students are advised to exercise. They should participate in games too. It would be a part of exercise as well. Express your feelings. इसके साथ हमें मानते हैं कि अगर जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने फीलिंग्स और अपने इमोशंस को वो एक्सप्रेस करते हैं, तो उनको समझते हैं, तो उससे उनका हैप्पीनेस स्ट्रेंथन हो सकता है. यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस, तो उसमें हमें 4 एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखना होगा कि सबसे पहले हमें अपने इमोशंस है उनको अंडरस्टैंड करना होगा, फिर उसके बाद रेगुलेट करना होगा अपने इमोशंस को, उसके बाद हमें मैनेज, और लास्ट में है कंट्रोल. तो बहुत बार ये देखा गया है कि बहुत से स्टूडेंट्स स्टार्टिंग में कंट्रोल करना चाहते हैं अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को. तो उनको इस मैं प्लेटफॉर्म के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ कि अपने जो फीलिंग्स हैं और इमोशंस हैं उनको वो समझें. और एक बात ये समझने की है कि जो एंजाइटी और स्ट्रेस एक नेचुरल है, एक अवस्था में वो एक नेचुरल है, क्योंकि इसको कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं किया जा सकता है. ये पार्ट एंड पार्सल है हमारी लाइफ का, जो एंजाइटी स्ट्रेस ये होता रहता है. लेकिन हमें एक स्किल्स डेवलप करना है कि हमें सीखना है कि अपने जो एंजाइटी और स्ट्रेस को कैसे हमें मैनेज करना है, और अपने इमोशंस को मैनेज करके हम खुश रह सकते हैं. और बी ऑप्टिमिस्टिक. और बहुत बार हम देखते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स शिकायत करने लगते हैं, और कभी कभी वो उनके अंदर इतनी निराशा का भाव उत्पन्न हो जाता है कि वो अपने आप को ये समझते हैं कि वो दे कैन नॉट डू एनीथिंग. सो दे नीड टू बी ऑप्टिमिस्टिक. दे think that they cannot do, it is right, they cannot do. If they think they can do, it is also right, they can do. So it depends on their outlook, how they look out, and so it is advisable for them to be optimistic. They must believe in themselves, their potential, as well as so they can put out their latent potential out, and have a meaningful goal. So they must have a meaningful goal in their life, so that they can strive and they can put forth their efforts genuinely. It will keep them busy in their task to accomplish that meaningful goal. With that meaningful goal, they can be happy. So we can strengthen happiness if we help or assist our students to set a meaningful goal there in their lives. Positive self-talk. It is highly important. It helps us to be happy. If we talk ourselves in a positive way, that is very important. But many times it has been observed that most of the people, irrespective of their age, they go on complaining and they criticize themselves badly. Even they cannot listen those sentences by other people they say about themselves. So they should avoid negative talk, and they should develop talking to themselves in a positive manner. It would help them to be happy. They should talk to them in that way that they can do it. They are improving. They have developed some skills. Their communication skills are improving, their confidence is building. So in that way
they can work on their strength. So in that way they can be happy. So next one, ask for help. Many students who need help but don't ask for help, they think that if they ask for help, they would be considered some less intelligent, and their friends might consider that they don't know these concepts, these are very simple concepts even. So they should skip, or they should avoid such tendency. They need to ask if they are having any problem. It would help them to sort out their problems, and they would develop confidence in their academic life that is related to their mental health and happiness too. So in that way they can remain happy. We can strengthen their happiness in that way. Be kind to oneself. Many times we remain kind to others. We talk politely to others. We behave well with others. But when we talk to ourselves, as well as we perceive ourselves many times in a negative way, that is a very big cause of not being happy. So if they minimize or eradicate or eliminate that tendency, if they do it, they will be happy, and we can strengthen happiness among adolescents easily. So we need to tell them how to be kind, how to love themselves. Self-love is very important too. So we can tell them that self-love is the first thing, so you can do it with yourself unconditionally. If you love yourself, so you can attract better things and positive things for your life. Develop a hobby. It is a very important thing. They need to develop some hobby, either in sports or in reading and any field in which they have interest and aptitude. So that thing will motivate them and to work hard, as well as to focus on the task to be accomplished. In that way, they can remain happy. Safe behaviors. This is also very important. If we tell or teach them, but because students learn by imitation many times, so it is a part of their lifestyle too. They need to behave safely, and they need to talk politely in that way, so they would not get into any conflict. So they can remain happy. Respect cultural practices. This is based on our composite culture. As we know that Indian context, we know that there are several cultural practices because of people of different cultural background. So we need to accept, value, and respect several or other cultural practices. So in that way, we can learn things. Learning always motivates a person. So our students will get motivated, and they will tend to learn new things, so they can remain happy. With these practices, we can strengthen happiness among adolescents. Thank you, ma'am. Over to you. Thank you, sir. Those were the ways through which we can strengthen happiness among adolescents. And here comes very interesting question that happiness can be taught in school. Dr. Ramesh, sir, I would like to ask you about this question. If happiness is a state of mind, how can we or our learner or students, adolescent can be in that particular state of mind, sir? Thank you very much, ma'am. I would like to pick it up from Mrs. Varthika Sharma's ma'am's quote. उन्होंने कहा कि हैप्पीनेस जो है वो एंड है, किसी फिलोसोफर ने कहा है। तो अगर स्कूल की फिलॉसफी में हैप्पीनेस एंड है, सेटिस्फैक्शन एंड है, हमारा मूड एंड है, होलिस्टिक वेलबींग इंपॉर्टेंट या एंड है, तो वो जरूर पढ़ाएगा, वो जरूर इनकलकेट करेगा वो स्किल्स, वो जरूर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, वो जरूर ऐसा एनवायरनमेंट बनाएगा जो हैप्पीनेस बच्चों की को स्ट्रेंथन करेगा। लेट मी बिगिन विद founder of positive psychology, Martin Seligman. He conducted a survey with the parents. उन्होंने पेरेंट्स को पूछा कि आपको अपने बच्चों में क्या चाहिए, व्हाट डू यू नीड इन योर चिल्ड्रन। तो मैक्सिमम जो वर्ड्स निकल के आए वो थे खुशी, हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन,
then contentment, then well-being. So what he found out, what he concluded कि हमें जो चाहिए, बच्चों में वो खुशी चाहिए, हमें वेलबींग चाहिए, लाइफ सेटिस्फेक्शन चाहिए, तो क्या हमारे स्कूल्स खुशी पढ़ा रहे हैं, हैप्पीनेस के स्किल्स पढ़ा रहे हैं, वेलबींग के स्किल्स, कंटेंटमेंट के, या हमें कुछ और चीज पढ़ाई जा रही है? एज वी ऑल नो कि हमें स्कूल्स में हमारा प्राइमरी जो फोकस है वो फंडामेंटल लिटरेसी और न्यूमरेसी है, जरूर होना चाहिए, पर उसके साथ साथ एंड क्या है, इस लिटरेसी का एंड क्या है? हमारे पास IITians हैं, हमारे पास IAS ऑफिसर्स हैं, तो जब उनकी लाइफ्स को हम देखते हैं तो कंटेंटमेंट नहीं है, सेटिस्फैक्शन नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है, आपस में रिलेशनशिप बिल्डिंग नहीं है, ह्यूमन वैल्यूज नहीं है. सो व्हाट इज द फन ऑफ दोज literary and technical skills when we are lacking the basic skills, when we are lacking mental peace? Very unfortunately, हमारे इंडिया का जो पायदान था हैप्पीनेस इंडेक्स में इन 2017 इट वाज 155th. हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान 155, मतलब बहुत कम. उसके बाद और गिरा, वो पाकिस्तान से भी नीचे था. मतलब हमारे लिए शायद वेलबींग एक प्राथमिकता नहीं है, ये कारण हमारे रहे होंगे. जबकि भूटान एक छोटी सी कंट्री है, वो मटेरियल प्रोग्रेस से ज्यादा जो प्रोग्रेस वो मानती है कि हमारा जो हैप्पीनेस इंडेक्स को जो है वो ज्यादा वैल्यू करती है. मैम मैं ऐड करता हूं कि पॉजिटिव एजुकेशन कॉन्सेप्ट है पॉजिटिव साइकोलॉजी का. पॉजिटिव साइकोलॉजी मार्टिन सेलिगमैन की देन है, जिसने कहा कि हम डिजीज, डेफिसिट, नेगेटिव वर्ड्स की बात ना करते हुए जो हम में बेहतर है, जो हम में पॉजिटिव है, हम उसको स्ट्रेंथन करेंगे. तो उन्होंने कहा कि पॉजिटिव एजुकेशन जो है वो क्या है कि ट्रेडिशनल प्रिंसिपल जो एजुकेशन के हैं उनके साथ साथ बच्चों को हम वो स्किल्स देंगे, वो फैक्टर्स बताएंगे, वो सेंसिटाइजेशन देंगे, वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो स्कूल का कल्चर तैयार करेंगे जो पढ़ाई के साथ साथ उनको एक हैप्पी ह्यूमन बीइंग, एक सेटिस्फाइड ह्यूमन बीइंग जो बनाए. तो वर्ल्ड ओवर बहुत सारी कंट्रीज में, चाहे वो UAE में, फिनलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, बड़े सारी कंट्रीज ने इनको अडॉप्ट भी किया है पॉजिटिव एजुकेशन के मॉडल को, और वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. हमारे इंडिया में भी दिल्ली हैज लेड इन दिस. दिल्ली की जो हैप्पीनेस क्लास है, उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि हैप्पीनेस कैन बी टॉट. आपको पता होगा कि दलाई लामा जी ने खुद आके उसका इनागुरेशन किया था. तो हैप्पीनेस क्लास में जो वो है वहां पे जो चुकी है. अब मैं फैक्टर्स पे आऊंगा जो बड़े स्मॉलर फैक्टर्स हैं. अगर वो स्कूल्स को पता होगा, सपोज हमारे स्कूल्स को ये पता होगा कि पॉजिटिव इमोशंस ये एक एंड है, हमने पढ़ाई के साथ, कंपटीशन के साथ हमने देखना है कि बच्चों में पॉजिटिव इमोशन ज्यादा रहे, नेगेटिव इमोशंस कम रहे, बच्चों का लाइफ में इंटरेस्ट रहे, बच्चों में लाइफ सेटिस्फैक्शन रहे. तो वो क्या करेंगे, बैलेंस बनाएंगे. हम उतना ही डोज देंगे किसी बच्चे को जो कि उनकी जो पॉजिटिव इमोशंस है उनको खराब ना करें, उनको नेगेटिविटी की तरफ नहीं ले जाएं, और हम नेगेटिव इमोशंस को दूर रखने के प्रयास जो है वो करते रहेंगे. तो पॉजिटिव इमोशन ये परमाह मॉडल है, PERMA, जो कि सेलिगमैन ने ही दिया है. P फॉर पॉजिटिव इमोशंस, E फॉर एंगेजमेंट, देन R for positive relationships, then M for meaning or purpose, then accomplishment, and last health. तो engagement, whether the child is engaged or not, जो child की strengths हैं, जैसे डॉक्टर उज़मा कह रहे थे कि अपनी strengths के accordingly उसको challenges मिले हैं कि नहीं. मेरे में आर्ट थेरेपिस्ट बनने के, मेरे अंदर रेडियो जॉकी बनने की स्ट्रेंथ है, और मुझे लगा दिया आपने IITian बनाने. मैं स्पोर्ट्स में अच्छा हूं, मुझे आपने लगा लिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने. So what is happening? I cannot be engaged in a task which is mismatch with my abilities. तो मैं अनहैप्पी तो हूँगा, मेरी पॉजिटिव इमोशन तो नेगेटिव में तब्दील होंगी. मेरी सेटिस्फैक्शन कहाँ से आएंगी? When my aptitude, when my skills are not matched with my jobs, then engagement मेरी नहीं आएगी. रिलेशनशिप, जब कट थ्रॉट कंपटीशन, जैसे ये वर्जित वर्ड्स हम आजकल यूज नहीं करते, रैट रेस, कट थ्रॉट कंपटीशन, जब इतनी प्रतिस्पर्धा, इतनी इंडिविजुअलिज्म स्कूल में चल पड़ा है, तो हम कोऑपरेट कैसे करेंगे, हम रिलेशनशिप कैसे बनाएंगे, हम सोशल सपोर्ट कैसे बनाएंगे. तो स्कूल्स को ये समझने की जरूरत है कि पॉजिटिव रिलेशनशिप को प्रमोट करना, पॉजिटिव एंगेजमेंट बच्चों में लाना, बच्चों में पॉजिटिव इमोशंस का ध्यान रखना उतना ही जरूरी है जितना अपने नोटिस बोर्ड पे हमने पोजीशन होल्डर्स की और IITian की फोटो चिपकाना है. उसके बाद बच्चों में अकम्पलिशमेंट का भाव, जैसे डॉक्टर उज़मा ने बड़ी अच्छी बात कही कि आज आपने क्या किया, ये आपकी अकम्पलिशमेंट है, कल आप क्या करेंगे, ये आपकी अकम्पलिशमेंट है. तो इतनी छोटी छोटी अकम्पलिशमेंट्स का जो रियलाइज कराना, और उसके बाद हेल्थ, बच्चों की हेल्थ और फिजिकल फिटनेस का भी ध्यान रखना.
नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि पॉजिटिव साइकोलॉजी हमें कहती है पॉजिटिव साइकोलॉजी इंटरवेंशन। हम बहुत छोटी छोटी एक्सरसाइजेस करके, वो क्लास में हो सकती हैं, वो क्लास के बाहर हो सकती हैं, वो मॉर्निंग असेंबली में हो सकती हैं, ये वाली सारी प्रैक्टिसेस हम अपने बच्चों को प्रैक्टिसेस करा के उनमें हैप्पीनेस ला सकते हैं। मनीष सर ने बड़े इलैबोरेटली बड़े सारे हैप्पीनेस स्किल्स की बड़े सारे हैप्पीनेस जो उनको टिप्स दिए। वैसे ही ये पॉजिटिव साइकोलॉजी की इंटरवेंशंस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेट मी बिगिन विद ग्रैटिट्यूड एक्सरसाइजेस, कि हम बच्चों को क्लास स्टार्ट करने से पहले बोलो कि बच्चों आप किसके लिए शुक्राना करते हो। आपके पास स्कूल है, घर है, खाना है, अच्छा टीचर है, सारे हाथ पैर आपके सलामत है। तो बच्चे में व्हाट वी हैव का कॉन्सेप्ट, जो किसी स्पीकर ने बोला था कि हमारे पास क्या नहीं है, हमारा फोकस यहां से हटके इमीडिएटली हमारा फोकस आ जाएगा हमारे पास क्या है। हमारे पास हाथ पैर है, खाना है, स्कूल है, एजुकेशन है। कितने सारे एडवांटेज्ड बच्चे हैं जिनके पास ये चीजें नहीं है। एकदम से बच्चे में एक पॉजिटिव फीलिंग, एक पॉजिटिव सब्जेक्टिव फीलिंग आएगी और वो खुश होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर शायद हमको नहीं पता कि काइंडनेस जो है ये भी हमारी हैप्पीनेस से जुड़ी है। अब हम बच्चे से पूछ लें कि पिछले महीने में आपने कितने ऐसे दयालुता वाले कार्य किए हैं, कितने काइंडनेस के एक्ट किए हैं। अगर बच्चा आंखें बंद करके रिमेंबर करता है, वो एक तो उसमें दयालुता की भावना बढ़ेगी, दूसरा वो बच्चे में खुशी की भावना आएगी। हाँ, हमने उसको हेल्प की थी, उसको नोट्स दिए थे, उसको खाना दिया था, उसको ये किया था, उस एनिमल को मैंने इस तरह से रेस्क्यू किया था। तो ये छोटी छोटी एक्सरसाइज। फिर उसके बाद ऑप्टिमिज्म के बारे में उनको ऑप्टिमिस्टिक अगर चीजें सिखाई जाएं, फिर उसको ये पूछा जाए कि आप सबसे पहले सबसे बेस्ट कब थे, कोई 3 इंसिडेंट्स बताओ व्हेन यू वर एट योर बेस्ट। और बच्चा बोलता है मैम जब मैंने प्राइज जीता था स्कूल में, किसमें, रेसलिंग में, जब मैंने गाना गाया था मैं। तो ये जो इमेजिनिंग है, ये जो छोटी सी एक एक्टिविटी आप बच्चे को करा रहे हो, इमेजिनिंग व्हेन ही वाज बेस्ट, वो उसमें एक अच्छी भावना ला देगा, वो उसमें एक बड़ी पॉजिटिव भावना ला देगा, वो उसमें एक खुशी का एक वो चीज ला देगा। फिर माइंडफुलनेस की जैसे इन्होंने बात की, तो हमारे बच्चे माइंडलेस हो चुके हैं, वो मोबाइल की वजह से, टेलीफोन की वजह से, ये टीवी की वजह से। पर अगर हम बच्चों को एक माँ आपने बच्चे को पूछती कि माँ बेटा नमक कम है या ज्यादा है या कैसा है, तो बच्चा फील करता है कि अच्छा मैं कुछ खा रहा हूं। तो बच्चे को माइंडफुल बनाने के लिए टीचर क्या कह सकता है, माइंडफुल ब्रीदिंग होती है कि सांस लो और सांस पे कंसंट्रेट करो। माइंडफुल ईटिंग होती है, आप क्या खा रहे हो उसका टेस्ट एंजॉय करो, अपना पूरा टंग के ऊपर घुमा के उसकी खुशबू लो। माइंडफुल स्लीपिंग होती है। तो ये छोटी छोटी एक्सरसाइज क्लास स्टार्ट होने से पहले, क्लास के एंड में, क्लास के मिडल में, मॉर्निंग असेंबली में, अगर हम इस तरह की पॉजिटिव साइकोलॉजी की इंटरवेंशंस करेंगे तो डेफिनेटली हम बच्चों को ऐसे स्किल्स जो हैं वो पढ़ा सकते हैं। रेनू मैम ने कहा, रेनू भट्ट मैम ने, कि ये सब्जेक्टिव फीलिंग है। बट मैडम ऑफ कोर्स दिस सब्जेक्टिव फीलिंग इज डिपेंडेंट ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। जैसे डॉक्टर मनीष ने बताया कि फिजिकल हेल्थ पे भी डिपेंडेंट है, हमारी बायोकेमिस्ट्री पे भी डिपेंडेंट है, हमारे रिलेशंस पे भी डिपेंडेंट है, हमारी थॉट्स पे भी डिपेंडेंट है, क्योंकि हमारे थॉट्स, हमारी इमोशंस और हमारा व्यवहार जो है इंटरलिंक्ड है। तो क्यों ना हम उन फैक्टर्स को प्रमोट करें जो हमारी सब्जेक्टिव फीलिंग को और पॉजिटिव बनाए, जो हमारी पॉजिटिव इमोशन जैसे जॉय, जैसे इंटरेस्ट, जैसे एक्सिलरेशन, जैसे एक्सुबरेंस, जैसे यूफोरिया, इन चीजों को और जो है वो स्ट्रेंथन करे। तो डेफिनेटली देयर आर एक्टिविटीज, देयर आर प्रैक्टिसेस, देयर आर इंफ्रास्ट्रक्चर्स which can increase happiness in our children. बड़ी छोटी एग्जांपल दूंगा हमारे जम्मू कश्मीर के स्कूल की, जिसमें हैप्पीनेस जोन की हमने शुरुआत की थी। वर्दी मनोज सिन्हा जी ने, जो हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उन्होंने खुद जिक्र किया था उसका। एक छोटा सा स्पेस बना दिया जहां बच्चे अपने मन की बात कह सके। तो ये छोटी सी एक एक्टिविटी, ये छोटी सी एक मन की बात कहना, जो बच्चे के द्वारा किसी कॉन्फिडेंशियल नॉन जजमेंटल जगह में भी उसको हैप्पीनेस दे सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंटली मैंने कहा कि अगर मेरे स्कूल का मोटो पोजीशन लेना है, आईआईटी में बच्चे सिलेक्ट कराना है, उसके साथ ये भी मैं मोटू कि मैंने कैरेक्टर वाले आदमी पैदा करने हैं, मैंने ऐसे सेटिस्फाइड ह्यूमन बींग्स पैदा करने हैं जो मटेरियल पैसे के पीछे नहीं भागते हुए पीस ऑफ माइंड कंटेंटमेंट के साथ भागे। तो मुझे लगता है स्कूल्स में ये हो सकता है। बाकी एक और पॉजिटिव साइकोलॉजी की देन जो नेक्स्ट स्लाइड में अभी जो विजिबल है, दैट इज स्ट्रेंथ हमारी। उज़मा मैम ने कहा बी योरसेल्फ। तो बी योरसेल्फ क्या होता है कि आपकी जो स्ट्रेंथ है उसको आइडेंटिफाई करो, उसको एम्ब्रेस करने का मतलब उसको प्रैक्टिस करो।
आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ एंड एम्ब्रेस योर स्ट्रेंथ। तो आपकी स्ट्रेंथ क्या हो सकती है? ब्रेवरी हो सकती है, क्यूरियोसिटी हो सकती है, होप आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है, टीम वर्क आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है, क्यूरियोसिटी आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है, सोशल इंटेलिजेंस आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है। तो स्कूल्स इस तरह का जो एक चार्ट बना सकते हैं कि कौन से बच्चे में क्या स्ट्रेंथ है, उसको मौका दे सकते हैं कि वो स्ट्रेंथ को प्रैक्टिस करे, और अगर वो स्ट्रेंथ को प्रैक्टिस करेगा तो वो खुश होगा, क्योंकि मैं जब अपने आप को मैनिफेस्ट कर रहा हूं, अपनी रियल सेल्फ को मैनिफेस्ट कर रहा हूं, तो मैं खुश ही रहूंगा। अगर अमिताभ बच्चन बैंकर बन जाता, अगर अमिताभ बच्चन आईएएस ऑफिसर बन जाता, तो ऑब्वियसली वो इतना खुश नहीं रह पाते जितने वो आज हैं, क्योंकि आज वो अपनी स्ट्रेंथ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बहुत सारे स्कूल्स में, मैं 2-3 एग्जांपल्स दूंगा, उसके बाद आई विल हैंड इट ओवर टू नेक्स्ट स्पीकर। 2-3 एग्जांपल्स में, जैसे बाउंस बैक प्रोग्राम्स कई लोग स्कूल चला रहे हैं। बाउंस बैक मतलब रेजिलियंस बच्चों में डेवलप करने के लिए, फेल हो गए तो कैसे बाउंस बैक करना है, ये एक प्रोग्राम है। दूसरा प्रोग्राम है आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ्स, स्ट्रेंथ फाइंडिंग, तो ये दूसरा प्रोग्राम है। तीसरा प्रोग्राम है उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी पाई चार्ट। जब भी कोई गलती हो जाती है वो देखते हैं कि मेरी गलती कितनी थी, पाई चार्ट बना के, दूसरे की गलती कितनी थी, तीसरे की, तो उनको बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है। तो उसके बाद माई फेवरेट एनिमल कौन सा है, जैसे टाइगर मेरा फेवरेट है, मेरे साथ क्या रिजेम्बलेंस है। उसके बाद आर्ट थेरेपी, जम्मू स्कूल्स में हमने आर्ट थेरेपी के सेशन भी स्टार्ट किए कि बच्चा कुछ ड्रॉ करता है, उसका मूड ड्रॉ करता है। देन डेली मूड ट्रैकर, मैं डेली मूड ट्रैक कर रहा हूँ कि मेरा मूड आज कैसा है, मैं उसको लिख रहा हूँ, पेंट कर रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ, उसको एक नंबर भी दे रहा हूँ कि आज मेरा खुशी का 10 में से 5 या 4 या 3 है। तो हम क्या करा रहे हैं, बच्चों को सेल्फ अवेयरनेस करा रहे हैं। मैंने वही कहा, अगर हमारा स्कूल का एम बच्चों की खुशी, बच्चों की सेटिस्फैक्शन, बच्चों का कैरेक्टर, बच्चों के लाइफ स्किल्स पे अगर फोकस रहेगा, तो हम अपने स्कूल्स में रोबोट्स नहीं प्रोड्यूस करेंगे इंडस्ट्रीज के लिए, हम अपने स्कूल में ऑफिसर्स नहीं प्रोड्यूस करेंगे ब्यूरोक्रेसी में, हम आइडियल ह्यूमन बीइंग्स प्रोड्यूस करेंगे जिनसे एक सोसाइटी हेल्दी होगी, हैप्पी होगी, कंप्लीट होगी। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू रेनू मैम। थैंक यू सो मच सर फॉर दीज वेरी ब्यूटीफुल वर्ड्स। जो आपने कहा, हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं जैसे दिल्ली में और आपने कहा जम्मू कश्मीर में भी ये इनिशिएटिव लिया गया है, स्कूल्स में हैप्पीनेस क्लासेस होती है। हम देख रहे हैं कि उसका काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस हमें स्टूडेंट्स पे मिल रहा है और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और यहाँ पर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी एक्सपर्ट्स को बता दूँ कि हमारे पास इस डिस्कशन के लिए हाफ एन आवर और बचा हुआ है, आधे घंटे का समय और है। तो हम चाहेंगे कि आप सभी अपनी बातें उसी में ब्रीफली और अच्छे से एक्सप्लेन करें हमारे सभी व्यूवर्स और स्टूडेंट्स को। यहाँ पर डॉक्टर मनीष, मैं दोबारा आपके पास आऊँगी और हम आपसे यहाँ पे जानना चाहेंगे, वी वर टॉकिंग अ लॉट अबाउट हैप्पीनेस एंड हैप्पीनेस फैक्टर्स एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स। हमें ये पता चला कि हैप्पीनेस ऑल्दो इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड, बट स्टिल अगर हम इंडिविजुअल की बात करें तो सिर्फ अपने आप से कोई भी बच्चा एडोलेसेंट खुश नहीं हो सकता। उसके आसपास काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं सराउंडिंग्स में जो उसकी हैप्पीनेस के लिए एक फैक्टर हो सकता है। तो यहाँ पर आपसे हम पेरेंट और फैमिली का रोल हम जानना चाहेंगे कि क्या कुछ इंपॉर्टेंट रोल है पेरेंट्स का और फैमिली का सर। Thank you, ma'am. As we know that adolescence is a stage that is rapid changes. So we need to understand that a child goes through several physical as well as emotional changes. So we need to understand that the family and especially their parents should support their kids unconditionally. They don't need to impose their expectations on their children. Many times, many parents force their children to opt to their academic stream by their own choice. So they should make students free to opt their own stream based on their interest and aptitude. So it is always advisable for the parents, they need to encourage their children to develop some skills rather than for rote memorization. So the first one that is very important, role model for good habits. Parents are the first role model for their children. If they perform their duties wisely, so their children learn by imitation. They try to follow their parents. They in initial stage, they consider their parents
the best ones, they always feel it that if their parents are with them, they can do anything. Slowly or gradually, things changes. As if parents don't share their time with their children, if their parents don't follow their routines as well. So the role of parents and family is very important to inculcate habits in the children. So parents and family members should develop some healthy habits. They should try to be role models for their children. In that way, we can strengthen happiness among adolescents. Develop skills and beliefs. The children learn first at home. So, parents should try to focus on developing skills in their children. They don't need to force their children to imitate forcibly. They need to make their children free so they can develop their own interest and they can learn things based on interest and aptitude. And we see for the beliefs. Whatever the belief system is in the family, the children go on following that belief system. So the role of parents and family increases as their parents need to encourage their children to be scientific. They should be humble and rational. So they can be free of superstitions and their belief system will be based on scientific temperament. In that way, they will not get into any trap. So they can remain themselves to be happy. Positive outlook towards life and learn. We can understand they need to have positive attitude or outlook towards life and learning. They should have belief system that they can do things. They can excel in their academic life as well as in personal life too. They can learn. So this type of attitude would help them to be happy. So parents and family members should develop such confidence in their children and they need to support their children unconditionally. They don't need to expect based on their own interest or expectations what they have not done, so their children will fulfill their wishes. This is not a good practice. And next one, answer to their questions. Many times it has been observed that parents avoid to answer their questions. Parents should interact with their children on all topics. All topics should be discussed so that the children will get valid knowledge. Many times at this age, adolescents go on searching knowledge through several ways. Many times they don't get valid knowledge. So they go on misleading after having some concepts regarding anything. In that way, parents must answer their questions if they consider such answers or questions don't need to be discussed, so they can seek assistance of any expert in that way. And next one, unconditional assistance in all spheres of life. The parents and family members must ensure their children, they are with their children. If they need any kind of help, their parents and family members will do it surely. In that way, the students will have high morale and confidence.
so they can do better in their life and contribute as well as in the society too. So we can understand the role of parents and family in such ways. Thank you, ma'am. Over to you. Thank you so much, sir. And those were the ways, and family and our guardians are very much important for adolescents if we talk about happiness and strengthening happiness. Dr. Uzma, here I would like to ask you about the peer group support. Throughout the session, we were talking about peer pressure and peer comparisons and etc. What about the peer group support for creating it and achieving happiness among adolescents, ma'am? Dr. Uzma. Yes, thank you again. Since we have been talking about the role of parents and the family, for the happiness of adolescents, there's a role of the family, there's a role of the parents, there's a role of a society and other communities. But the most important agency and most important factor is the peer group. So basically, what peer group is? Basically, this is peer group is a type of social group. In that group, he may have or they may have a similar age and have a similar interest. And for their peer group and for these, adolescents, peer group circles are the most important circles that they like to be with. Whatever their peers say, they would love to do and follow their peers. One thing, they only want to be the member of these peer groups. So you can analyze how important this peer group is for an individual or for an adolescent. Peer groups are influential and essential during the adolescence. If we talk about this transitory period, this is a transition period from the childhood to the adulthood. This transition period, यहाँ पे क्या हो जाता है? In that वहाँ पे gap आ जाता है parents और एक individual के बीच. So here the role of peer group comes. Peer group एक ऐसा role निभाता है जहाँ पे उनके लिए there's a social and emotional support उनको provide करता है. Peer group provides social and emotional support to the students or to the adolescents. Adolescents feel a sense of belongingness in each other's company. They really help each other to achieve their identity. In an adolescent, so for example, अगर किसी adolescent की अगर हम बात करेंगे, he does not have any peer group and he does not belong to any peer group. So do you know how hamper their life, how this hamper their growth and development? So having close relationships during the adolescence period is quite natural and good for the development. अगर हम peer group की बात करेंगे, peer group helps the adolescent in making them socially skillful. Socially skillful भी बनाता है, हमें peer group से skills आ जाते हैं, social skills हम सीखते हैं through this group. It's not only a network of people. Please mind it, it's not only a network of people or network of friends, but this group helps you to develop skills, your social skills, and get sort from the problems of society. There are many social problems, many social evils which you can talk about. So this peer group can help you to solve these social problems. So there are certain ways, we can talk about there are certain ways through which we can support our peer groups. There's one thing is care for your buddy. When we care for our buddy, you need to care for your buddy. Care for buddy is very important. One thing, you don't need to tell them, I really care for you, yeah, I love you the most. You don't do these kind of things. What you have to do? You have to appreciate your buddies. You have to appreciate your friends. You have to be there when they're in the tough times. You have to be there when they're during the struggles of life. You need to be with your friends. During their downcasts, you have to persuade them. You need to lift them up. When life knocks them down, you always support and lift them up, because it is only a real friend who provides encouragement and support to their friends. So there another thing which there, it's about peer counsel model. Nowadays it's very popular, peer counseling model, and it's not a new, although it has been used since a very long. So also it has been proven a very important and efficient and effective. Instead of teacher-learning relationship, से भी ये बेहतर साबित हो गया peer counseling models.
basically what we do in the peer counseling models, we do the interaction sessions, and they may be of the same age. All the students may be of the same age, and they discuss their matter, discuss their issues. Amicably, they discuss their issues and constantly improve their academics and any sort of problems. There's another way to improve the happiness among the students, among the adolescents, is collaboration and cooperation. While we talk about the collaboration and the cooperation, when we see it, it's somehow we are getting togetherness. We are being in it's sort of togetherness. So when we talk about to collaborate well with, one thing, this is important and essential part of the life. It contributes something that's important for the capacity of the teams. It's important. It develops respect, and one important thing, it resolves conflicts among the students. I request parents and teachers that they should encourage their teams to participate in the cooperative learnings, cooperative activities, whether it be with sports, it may be clubs, it may be arts. And one more thing, we should take care of everything. We should make sure that there should be a balance. There should be a balance between activities, schoolwork, and the family time. One important thing which I would like to take a call on, there's one important message for my viewers. It's like you have to choose your friends wisely. One thing, your peer group is most important. You have to pick your friends wisely. If you are a friend or a person, if you are a friend with a person or a group of a person whom you trust, whom you fun with, or whom you talk, then you must be lucky to have a good friend around you. But if you have a friend who are in bad things, or indulged in bad things, and want you to do the same, or you are pressurizing you to do the same, then, dear student, you need to find a new friend. Dear viewers, remember one thing. You became the people you hang out with. If you hang out with the good influencers, definitely you'll find good things in yours. And if you hang out with the bad influencers, and you'll be among them. So be a good judge while choosing your friend. So this is how peer group is important, and peer group supports happiness among the students. Thank you. Over to Renu ma'am. Thank you so much, Dr. Usma. And Vardhika ma'am, here, please explain the role of school and society in strengthening happiness among adolescents, ma'am. Renu ma'am, first of all, I would really like to say thank you to Dr. Romesh Kumar. The way he quoted so many examples of citing from all over the country, and secondly, the things he appreciated, and just now Ma'am Uzma was telling about peer group and everything, and third fellow Dr. Manish. Before coming to my point that what is the role of school and society, very wonderfully Manish has explained about the role of parents. Right. Now I'll take you to the point, ma'am, because today's talk is very much interconnected with the not only the adolescent child or adolescent age group people, but with the many younger aspects and the viewers who are watching this panel discussion. Now let me come to a very important that how school and society. First of all, I would like to make clear to my viewers that since my childhood, I myself has ever heard my school is a second home. हम घर से जाते हैं और कहते हैं कि आगे के 8 घंटे हम कहाँ बिताने वाले, that is school. And then if you remember, there is a very good saying that man is a social animal. It comes on the thing of society. Without being social, you cannot be a part of society. It is very much clear. Now I would like to tell the parents also who are watching our panel discussion that you are also a part of society. You have to take care of your child most, because healthy atmosphere of home will definitely take you to the healthy atmosphere of school as well as society. Because without intervening of home and homely atmosphere, adolescent can never ever become the best youthful part of country or world.
Now we see, ma'am, the first thing, which is adolescent phase, which is passed in school only. You can see that when a child is in school, his physical energy level is very high. So I would like to tell the teachers also who are listening and becoming a part of our panel discussion, that make the child feel important, and games is a major thing which can inculcate a feeling of cooperation, a feeling of brotherhood, and feeling of doing the best, because happiness can only be derived if the child is busy and involved everywhere. Second thing, ma'am, I would like to say that a child should learn to make friends. The most important aspect, if you stay all alone, you can stay all alone. But happiness cannot be derived staying all alone all the times. So school and society, both we will have a common path, ma'am. I cannot distinguish between both apart. They are in together. हम लोग ये देख सकते हैं कि बच्चे के लिए दोनों ही चीजें, संस्था और समाज, एक महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं. बच्चे को अकेला नहीं छोड़ना है, उसमें डेवलप करने हैं और कल्टीवेट वैल्यूज करने हैं. इसका अर्थ कहाँ जाता है? मैंने अपने पिछले क्वेश्चन के उसमें फैक्टर्स में भी ये डिफाइन किया था, जहाँ मैंने साइकोलॉजिकल चेंजेस में बात की थी कि बच्चे को लव, ट्रूथ, sympathy, cooperation, all these things are basic ingredients for the best upliftment of a child who's adolescent and coming towards the youth age. एक समाज के अंदर बात चल रही है मैम आजकल की अंडरस्टैंड एंड वैल्यू कल्चरल एंड ट्रेडिशनल नॉर्म्स. बच्चा, पहले भी हम सभी के जिक्र में ये थोड़ा थोड़ा निकल के आ रहा है कि जो बच्चा है वो ये चाह रहा है कि उसको किसी भी सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना, वो मॉब से दूर भागता है, वो न्यूक्लियर रहना मांगता है. तो हम चाहेंगे कि समाज में, समाज का अर्थ केवल यहाँ पर ये नहीं है कि कोई एक समुदाय विशेष का समाज हो या धर्म विशेष. समाज का अर्थ है कि कभी कभी कुछ को करिकुलर एक्टिविटीज जो खाली स्कूल में तो स्टेज पर होती हैं, डांस हो गया, गेम्स हो गया, डिबेट हो गया, एजुकेशन हो गया, देयर आर सो मेनी थिंग्स इन विच अ चाइल्ड कैन बी इन्वॉल्व. बट सोसाइटी में भी आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सारे सामाजिक फंक्शंस में बच्चों को इन्वॉल्व करिए. इट शुड नॉट ओनली फॉर द मैच्योर पीपल. आप बच्चे को वहाँ एडजस्टमेंट सिखाते हैं, और वहां जब बच्चा जाता है तो इस कॉम्पिटिटिव युग की हर चीज को अपनी आंखों से दिखता है, दैट हाउ माय पेरेंट्स आर मूविंग, हाउ माय एल्डर्स आर मूविंग इन द सोसाइटी. ये सब चीजों को देखना होगा. देन अ मेजर थिंग, हम सभी वी ऑल नो दैट स्कूल and society both are a place of social interaction and moral development. नैतिक उत्थान किसी भी विद्यार्थी, किसी भी एडोलेसेंट के लाइफ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जहां वो सत्य है, अहिंसा है, मुझे झूठ नहीं बोलना है, ऐसी चीजों को केवल सुनता नहीं है मैम, वो इम्प्लीमेंटेशंस को भी देखता है. उसके अंदर डिफरेंशिएट करना आना बहुत जरूरी है कि हैप्पी लाइफ और गुड लाइफ दोनों में अंतर क्या है. मैं कह सकती हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे पास एक बहुत अच्छा सा स्कूटर है, मेरे पापा ने मुझे बहुत सारी चीजें दिलाई हैं. लेकिन मैम गुड लाइफ क्या है? गुड लाइफ है कि उन रिसोर्सेस को मैं किस तरह पॉजिटिव वे में यूज कर सकूं. यहाँ मोरालिटी भी आ गई मैम, और चीज को इस्तेमाल करने की बात भी आई. तो हैप्पी लाइफ और गुड लाइफ का बेसिक अंतर आता है दो वर्ड से. वन वर्ड इज मैम, यहाँ पे आई एम सो सॉरी, आई एम इंटरप्टिंग यू. हम वी आर रनिंग वेरी शॉर्ट ऑफ टाइम राइट नाउ. हम आपसे निवेदन करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज ब्रीफ. हाँ, आप हमारे 2-3 पॉइंट्स. एक तो बच्चे का समग्र होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, उसकी लाइफ को मीनिंगफुल बनाना है. और फॉर माय व्यूअर्स, इफ एनीबडी इज टीचर आउट देयर, आई वुड लाइक टू से ओनली वन थिंग, दैट टीचर इज अ गाइड, a mentor and philosopher who can change the entire scenario into a happy scenario of a child. And in last, I would like to end with this statement, that boost every adolescent with praise, clear rules, and a healthy family lifestyle and warm family relationships. Here I conclude my thing, and I would like to hand over the mic to
Dr. Romesh sir, who will give us the curriculum guidelines of strengthening happiness among adolescents. The curriculum basis of Dr. Right. Romesh. Dr. Romesh, please explain, sir. Yes, ma'am. As I have already told, that happiness can be taught, or the skills to be happy can be taught in the schools. So let me begin with the examples of Delhi happiness class, which was appreciated the world over. अब सबसे पहले जब भी हैप्पीनेस करिकुलम हम फ्रेम करेंगे, हम सारे जो फैक्टर्स, हमारे सारे जो स्पीकर्स ने, वर्दी स्पीकर्स ने बोले, चाहे वो सोसाइटल फैक्टर्स हैं, पेरेंटल फैक्टर्स हैं, जो इंडिविजुअल फैक्टर्स हैं, उनको हमने ध्यान में रखना है कि व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच मेक अ चाइल्ड हैप्पी. हम वेलबींग की बात करें तो वेलबींग में सब्जेक्टिव, जिसको हम इमोशनल वेलबींग, फिर उसका सोशल वेलबींग, फिर साइकोलॉजिकल वेलबींग. बड़े सिंपल भाषा में समझाऊंगा. मेरी भावनाएं जो सब्जेक्टिव हैं, मेरा साइकोलॉजिकल वेलबींग मतलब मेरा पर्पस क्या है लाइफ में, मैं कितना सेल्फ अवेयर हूँ, मैंने कितने अपने आप को एक्सेप्ट किया है, मेरी कितनी कंट्रोल या मास्टरी है ओवर मी, इस तरह की चीजें. और सोशल वेलबींग, मैं किस तरह दूसरों के साथ गैल करता हूँ, क्या मेरे सोशल रिलेशनशिप हैं, कितनी मेरी दूसरों के साथ जो है बॉन्डिंग है. मतलब मुझे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, मेरे इमोशनल फैक्टर्स और मेरे सामाजिक फैक्टर तीनों जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं. तो अब हमारे करिकुलम में ये तीनों फैक्टर्स का सामंजस्य होगा, थोड़े थोड़े होंगे. तो सबसे पहले फिलॉसफी होती है हर करिकुलम की. सिमिलरली मैं ये रिकमेंड करता हूँ, मेरे ये पर्सनल व्यूज हैं कि जिस तरह उसका रिच ट्रेडिशन इंडिया का रहा है, चाहे वो योग की फिलॉसफी है, चाहे वो वेदांतिक फिलॉसफी है, अन्न में, मनो में, विज्ञान में, आनंदमय कोशा. आनंदमय कोशा इज द इनरेस्ट, जैसे हम शीत बोलते हैं, तो सबसे आनंदमय कोशा कि हमारा आत्मा का स्वरूप है जो. तो इस तरह की जो रिच इंडियन ट्रेडिशन के साथ हम अगर चलेंगे तो मुझे लगता है हमारा हैप्पीनेस करिकुलम विल बी, जैसे पहले था, तो वी विल बी अ वर्ल्ड लीडर इन हैप्पीनेस करिकुलम. नेम करिकुलम आने से थोड़ा सा आई एम लिमिटिंग इट. देन व्हाट मेक्स मी हैप्पी, हाउ कैन आई बी इंस्ट्रूमेंटल इन मेकिंग अदर्स हैप्पी. उसके बाद क्या ये किताब क्वेश्चन आंसर टाइप इस तरह का होना चाहिए, क्या ये करिकुलम और स्ट्रेसफुल बच्चों के लिए होना चाहिए? नॉट एट ऑल. इट शुड बी एक्टिविटी बेस्ड, इट शुड बी जॉयफुल बेस्ड, इट शुड इन्वॉल्व क्रिएटिव एक्सप्रेशंस, रिफ्लेक्शंस, इट शुड इन्वॉल्व माइंडफुलनेस, इट शुड इन्वॉल्व एक्टिविटीज. तो वो सारी जो चीजें, जैसे इसका एग्जाम, इसका कोई कंठस्थ या लर्न करना या क्रैम करना, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए. देन डिफरेंट ग्रेड्स के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज होनी चाहिए. एज यू नो कि हमारा डेवलपमेंटल लेवल अलग है, हर लेवल की नीड्स अलग हैं, तो हमें डिफरेंट लेवल के लिए डिफरेंट जो है वो हैप्पीनेस करिकुलम बनाना पड़ेगा. दूसरा जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट पहलू, क्या हम उसी क्लास के साथ इंटीग्रेट करेंगे या स्पेशल हैप्पीनेस आर या हैप्पीनेस क्लास होगी हमारी. जैसे दिल्ली ने हैप्पीनेस क्लास रखी और वो रोज नहीं होती, वो वीकली या 2 वीकली थोड़ी सी एक्टिविटी जो है वो डेली होती है, जैसे माइंडफुल एक्टिविटी. हमने ये फाइंड आउट किया है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारी कंसंट्रेशन है, तो इसलिए माइंडफुलनेस और मेडिटेशन शुड फॉर्म कोर ऑफ एनी हैप्पीनेस करिकुलम. हमें जैसे ध्यान लगाना, हमने देखा कि हमारे ट्रेडिशन में चाहे वो वाद्य यंत्र से लेके, चाहे पढ़ाई से लेके, हम ध्यान लगाते थे या प्रेयर करते थे, तो इनडायरेक्टली हम माइंडफुल हो जाते थे, हम अवेयर हो जाते थे हियर एंड नाउ के, कि जो पास्ट की चीजें हैं, जो आगे पीछे की चीजों को छोड़ के लेट अस फोकस ऑन हियर एंड नाउ. तो मेडिटेशन, माइंडफुलनेस जो है दैट शुड बी द कोर ऑफ. उसके बाद जैसे आपने देख लिया कि फिजिकल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ग्रोइंग अप हेल्दी शुड ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ इट. कि हमारी जो न्यूट्रिशन, स्लीप, देन आवर फिजिकल एक्सरसाइज, जैसे सारे फैक्टर्स, तो दिस शुड बी फॉर्म. एक्चुअली हमें वो करवाया जाना चाहिए अंडर द बैनर ऑफ हैप्पीनेस करिकुलम. देन ये सभी ने कह दिया कि हमारी वैल्यूज जो हैं वो हैप्पीनेस से लिंक्ड है, जैसे मैडम ने अभी कहा. तो हमारी वैल्यूज में आपको बताता हूं, जैसे हमारी काइंडनेस है, ये हैप्पीनेस से लिंक्ड है. ग्रैटिट्यूड जो है ये हमारा वेलबींग से लिंक्ड है. क्यूरियोसिटी हमारी, मैंने अपनी खुद की रिसर्च, पीएचडी रिसर्च में ये पाया, ग्रैटिट्यूड जो है, हमारा जो सेल्फ कंट्रोल है, ये हैप्पीनेस से. तो हम उन वैल्यूज की इनकलकेशन करेंगे. हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन आई, उनका प्रोग्राम का नाम था पूर्णतया. तो वैसी वैल्यूज जो हमारी, वैसे तो सारी वैल्यूज ही वेलबींग और हेल्थ, हमारा जो इमोशनल हेल्थ के साथ लिंक्ड है, हैप्पीनेस के साथ लिंक्ड है, पर प्रोमिनेंटली जैसे होप, जैसे क्यूरियोसिटी, जैसे ग्रैटिट्यूड, जैसे काइंडनेस, जैसे इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, स्पिरिचुअलिटी, सेंस ऑफ ह्यूमर, इस तरह की वैल्यूज की आइडेंटिफिकेशन और उनकी स्ट्रेंथनिंग जो है दैट शुड फॉर्म द कोर ऑफ दिस हैप्पीनेस करिकुलम.
देन हम लाइफ स्किल्स एजुकेशन की जो सीबीएसई के स्कूल्स में भी है, मैम वर्तिका शर्मा मैडम जो है उनके स्कूल में भी लाइफ स्किल्स एजुकेशन होगी। तो ऐसे बहुत सारे लाइफ स्किल्स जो हैं दे आर डायरेक्टली लिंक्ड विद, बहुत सारे 21st सेंचुरी स्किल्स हैं जो डायरेक्टली लिंक्ड विद हैप्पीनेस। उनमें से जैसे मैनेजिंग योर स्ट्रेस, देन रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग, देन मैनेजिंग इमोशंस, देन कम्युनिकेशन, और लेटेस्ट जो आ रहा है 21st सेंचुरी स्किल्स दैट इज कोलैबोरेशन। कट थ्रॉट कंपटीशन को छोड़ के अगर हम कोलैबोरेशन करना सीख लेंगे, हम रिलेशनशिप बॉन्डिंग करना सीख लेंगे, तो वो जो है हमारी हैप्पीनेस को है जो वो है इम्प्रूव कर सकता है। तो कुल मिला के मैं कहूंगा कि अ बिट ऑफ लाइफ स्किल्स, वैल्यू एजुकेशन, फिजिकल हेल्थ एंड माइंडफुलनेस ट्रेनिंग एंड ऑल्सो इंटीग्रेटेड करिकुलम। जैसे मैंने कहा कि एंड है हमारा हैप्पीनेस या सेटिस्फैक्शन, तो मैं जो भी क्लास पढ़ा रहा हूं, मैं इंग्लिश, हिंदी, पोएम्स, उसमें मैं वो मीनिंग फाइंड आउट करूंगा कि हाउ दिस वैल्यू इज कमिंग, हाउ दिस वैल्यू इज मेकिंग अदर्स हैप्पी। तो उस वैल्यू के आधार पे मैं बच्चों को जो है वो इंटरवेंशन करके उनका हैप्पीनेस जो करिकुलम जो है वो मैं कहूंगा। लास्ट में बस मैं ये कहूंगा कि ओके, वेरी ब्रीफली, कि अपनी नीड्स को आइडेंटिफाई करना, अपनी स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करना, दूसरों के साथ म्यूचुअली को एग्जिस्ट करना और अपनी फीलिंग्स को समझना, अपनी स्ट्रेंथ्स को प्रैक्टिस करना, ये सारी चीजें अगर हम स्कूल करिकुलम में डाल लेंगे तो हमारे बच्चे कहीं ज्यादा वेलबींग से युक्त और कहीं ज्यादा हैप्पी जो है वो बन जाएंगे। जी मैम, थैंक यू। थैंक यू सो वेरी मच सर। अभी वी आर लेफ्ट विद कपल ऑफ मोर मिनट्स हेयर। राजीव सर, हम चाहेंगे कि आप इस सेशन को कंक्लूड करें और आप सोशली डिसएडवांटेज जो ग्रुप्स हैं उनके ऊपर लाइट डालते हुए, रोशनी डालते हुए हम सभी व्यूअर्स एंड लर्नर्स को बताएं सर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ देयर हैप्पीनेस सर। डॉक्टर राजीव सर। Yes, thank you so much, ma'am. Are you able to hear me? Yes, sir. Yes, ma'am. Thank you so much. Thank you so much. And sir, we are running very short of time. We want you to conclude this session in a minute, sir. Yes, I understand. There are 2-3 minutes left only. So, just in conclusion, for children with special needs, when we are dealing, it is not individual. It is not intrinsic. Try to understand the children with special needs are dependent. Dependent on their parents, dependent on their family members, and dependent on the teachers, special teachers also, and other professionals also. When their needs are fulfilled, they are satisfied and they are happy. So here the basic needs itself need to be fulfilled. So the need, the type of disabilities and the social environment of a child is important. So briefly, this is there. So that's why finally I just want to say, for happiness, a person is there in the center, and whatever individually subjective factors are there, if it is children who does not have disability, then subjective factors are there that should be entertained. And because the children are adolescents, so that's why emotional state should be considered. For children with special needs, yes, their need, the type of disability, because when there is a disability and when there is a gender, there are two disabilities for one person. Like one person has hearing impairment and intellectual disability. Both their need itself is fulfilled in a very different way. So that's why many things need to be considered, and after that, happiness comes. Over to you, Renu ma'am. Thank you so very much, sir. थैंक यू सो वेरी मच फॉर द होल पैनल। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी मैं, क्योंकि समय बिल्कुल इजाज़त नहीं दे रहा है कि हम इस सेशन को और आगे बढ़ाएं। बट थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन एंड इन्फॉर्मेटिव सेशन एंड डिस्कशन। डॉक्टर राजीव रंजन, डॉक्टर मनीष अग्रवाल, डॉक्टर उस्मान नज़ीर, डॉक्टर रोमेश कुमार एंड मिसेस वर्तिका शर्मा, थैंक यू सो वेरी मच मैम। Thank you so much. Thank you. Thank you so much. And in the last, not but the least, thank you so very much for all the audience and viewers, learners who joined us throughout this session, and for your valuable comments. It's time for me to wrap up this session here only, but you stay tuned to PMeVIDya channel or ncertofficial YouTube channel. Me, Renu Bhatt, is signing off. Namaskar. Thank you, everyone. Thank you, NCRT team. Thank you, Rajiv sir. Thank you.